वट सावित्री व्रत के अवसर पर जगह जगह मंदिरों में सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा पूजा अर्चना की गई। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 13 से पूर्णिमा तक वट सावित्री व्रत का अनुष्ठान सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा किया जाता है। 3 दिन उपवास रखा जाता है और आखिरी दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आज शहर के कई मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। गोत्री रोड राजेश टावर रोड स्थित मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूजा की गई। सती सावित्रीए वड नीचे बेसी एना पतिनु माथुं खौडामां मूकी अने यमराजा पासे वरदान मांग्યું કે આવી રીતે દર વર્ષે હું આવી રીતે વ્રત કરું છું તો મને મારા પતિનું લાંબા આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરે છે અને દર વર્ષે અમે કરીએ છીએ। અમારી મનોકામના પૂર્ણ થાય છે આ વ્રત કરવાથી। આ 3 દિવસનું વ્રત હોય છે। 13, 14 ને પૂનમ। આજે આ વ્રતની પૂનમને દિવસે આની પૂર્ણાહુતિ થાય છે અને બધા વડનું પૂજન કરે છે। વડની અંદર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેય દેવોનો વાસ રહેલો છે અને સતી સાવિત્રીએ પોતાના પતિના આયુષ્ય માટે આપણે આ સાવિત્રી દેવીએ એમના પતિ માટે આ આયુષ્યની વૃદ્ધિ માટે આ વ્રત કર્યું હોવાથી બધી પરણિત સ્ત્રીઓ આ વ્રત કરે છે। પ્રતિવાર્ષિકા અને પોતાની બધી મનોકામના પૂર્ણ થાય છે અને અખંડ સૌભાગ્યવતીની પ્રાપ્તિ થાય છે। गोरवा विस्तार के चित्रकूट कैंपस में जय शक्ति नगर, भारत नगर और आसपास की सोसाइटी की सौभाग्यवती स्त्रियों को शास्त्री यमुनेश पंड्या ने वट सावित्री व्रत का महत्व समझाया। सावित्रीनी छे जे पतिनी लांबी उमर माटे करवामां आवे छे अने एनुं महत्व ए छे के पतिनी लांबी उमर थाय अने एमनुं स्वास्थ्य सारुं रहे अने घरमां बधा सुख शांति रहे एनी माटे आ व्रत करवामां आवे छे। वट सावित्रीनुं व्रतनुं पूनमनुं व्रत करीए छीए। अमारा पतिदेव ने आयुष्य माटे वट सावित्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रणेय लोक में वखाणायेलुं छे। देवादी देव लोकोए पण आ व्रतनुं महात्म्य कर्युं छे। तो अनादिकाळथी जे देवोलोकथी चाल्युं छे ए आज सुधी आ युग सुधी व्रत चालतुं ज रहे एवी सौ बहनों आशा करे छे। वट सावित्रीना परम पवित्र दिवसे समग्र गुजरात में ज नहीं तो समग्र भारत में आज बहनों वडનું પૂજન કરશે અને એનો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ હશે બહેનોનો કે પોતાનો છૂટી ચાટલો સલામત રહે અને પોતાનું પતિનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે માટેનો એમનો આજનો ઉદ્દેશ્ય હશે। આ બહુ વર્ષોથી પરાપૂર્વ વર્ષોથી આ વિધિ આપણા શાસ્ત્રોક્ત રીતે સમગ્ર ભારતમાં ઉજવાતી આવેલી છે। તે આ વિધિ માટે આજે આપણા નવનિર્મિત अमरा हाउसिंग बोर्ड में वडलानी पूजा शास्त्री श्री यमनेश द्वारा करवामां आवेल छे। एमां खूब ज बहनोए खूब मोटी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लईने आजनो दिवस खूब ज ए लोकोए सुंदर रीते साथ सहकार आपेल छे। प्रतापनगर रोड स्थित गीता मंदिर में भी एक साथ सैकड़ों स्त्रियों ने वट सावित्री के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना की। गीता मंदिर आ प्रतापनगर रोड पर आवेलू छे अने बहुत प्राचीन मंदिर छे। अहींया आगळ आज वड सावित्री व्रतनुं उद्यापन करवामां आव्युं छे। तेमां आश्रे 350 जेटली बहनोए भाग लीधो छे। अहींया आगळ मुख्य हेतु आ समूहमां उजवવાનો ए छे के गरीब तवंगर कोई बी होय बधा एक साथे व्रतनुं उद्यापन करी शके। मुख्य हेतु अमारो अहींया आगळ ए छे।